Hi, welcome on YourPedia Education, and you must have seen the first video we published on the new paper which was introduced on geomatics and the opportunities for different branch of students, branches when we say like civil engineers and students from electronics, computers, computer science, physics, mathematics, agriculture, mining engineers. So of these 8 branches students, there are opportunities to go for geomatics, which is the paper number 2, geomatics paper number 2, which is introduced for students of these branches. Now, there was no dedicated paper for data science, and there are so many good courses of data science in IITs and assured placements and abroad opportunities also. Now, through this geometric syllabus, geometric paper, there is opportunity for all these branch students to get into geomatics or get into data science and get a selection into these courses of masters, MTech, MS, PhD and get very good placements also. Now, this is a great opportunity. First time this paper has been introduced by IIT Kharagpur. So, that is what we want to discuss, and this syllabus I discussed with you in the last class also. Let me repeat hurriedly. This particular part is a common for all branch of students who will take geomatics as their paper, second paper. So this is common, and this will have 55 marks. 15 marks are for aptitude and 55 marks are from this particular topics. So you understand that very precise module can be made, and out of 55 surely you can get 30 marks in this particular part, and aptitude also you can get it. So it is very less input and very high output to get score and get into those courses. And as I told you in the previous video also, YourPedia is going to launch this entire module in a very effective way, so that each one of you who will prepare for couple of hours every day next 3-4 months, it is going to be very easy. So second part is this part, which is especially section 1, section 2. There are 2 sections. Now section 1 can be taken by civil engineers, by mining engineers, by agriculture engineers. They can take this particular part, and this part also 3 topics are there. So as per my discussion with the mentors, Ruchin sir is going to discuss with you in detail about that. But as per my discussion with the mentors, this 35 marks may say, this is 35, earlier was 55, right? So this 35 marks में से आपको बहुत ही कम effort पे you can score very high into this. So 15 aptitude and then 55. I think this is 30 marks then, not 35 but 30 marks. So 55 जो मैंने आपको पेपर बताया common paper, ये 55 का है, and 15 marks aptitude के हैं, तो बाकी हमारा ये 30 marks का बच गया. So ये 30 marks में से भी बहुत आसान से 3 टॉपिक हैं आपके, easily you can score very good marks in this particular part. सेक्शन 2 जो है पार्ट बी का, दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल, कंप्यूटर्स पीपल, मैथमेटिक्स, फिजिक्स पीपल, ये उनके लिए बहुत अच्छी डोमेन है. सो आउट ऑफ 30 मार्क्स यू हैव टू स्कोर गुड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, एंड दैट इज व्हाट जियोमेटिक्स इज ऑल अबाउट. एंड इसमें द गुड थिंग इज, एज आई टोल्ड यू दैट YourPedia इज गोइंग टू लॉन्च this dedicated module for this. So I'm going to discuss with you, if once you fill the Google form, we will have Zoom interaction with those students who are interested in this. ये assured selection module YourPedia इसमें launch कर रहा है, in which we will be telling you that what kind of projects you can reflect in the interviews further. ये modules वही लोग लें जिनको IITs के अंदर masters करना है, placement उठानी है या abroad जाना है. उनके लिए हमने पूरा लिंक इसको कनेक्ट किया हुआ है. जैसे आपका पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग इसमें ऐड करनी है, प्रोजेक्ट्स क्या कर सकते हो आप इंटरव्यू में जो आपको हेल्प करें वो इसमें ऐड करना है. उसके बाद अब्रॉड में क्या अपॉर्चुनिटीज किससे रिलेटेड है वो इसमें ऐड करना है, और कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो. वी आर गोइंग टू ऐड दिस एंटायरली फॉर दैट. सो दोज ऑफ यू विद वेरी लेस एफर्ट दे वांट टू लैंड अप इन दीज कोर्सेज एंड गेट प्लेसमेंट नेक्स्ट समर्स, दे वांट टू गेट इनटू IITs एंड ऑल, please go for this module. YourPedia is going to launch extensively on these domains. बहुत कम एफर्ट है, सिस्टमेटिक करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे. वी विल कीप ऑन गिविंग यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर डोमेन्स, बट 8 ब्रांचेस स्टूडेंट्स, दिस इज समथिंग टू चीयर अबाउट, बिकॉज डाटा साइंस पे एज सच पहले कोई मॉड्यूल नहीं था. अब डाटा साइंस में एंटर करना, इजीली एंटर करना, आप भी जानते हैं डाटा साइंस वगैरह में एंटर करना कन्वेंशनल के साथ बहुत डिफिकल्ट है, बट इनके थ्रू वेरी इजीली यू कैन एंटर ऑन डाटा साइंस एंड ऑल. दिस इज हाउ इट इज टू बी डन. सो ऑल द बेस्ट, लेट्स प्रोसीड अहेड ऑन दिस. थैंक यू.